ที่แบบว่าดูที่จะตึงเท่ารายการนี้เลย Yeah, so the time at that point when we are playing in C1, like everyone saw that our form is like not the way we normally play because like there's a little bit of problem we have been running to, but right now everything has been fine. So all the problem have been solved, and us like in this event there's so many strong teams. Actually, we really like it because like it's really fun to play against a strong team. Wow, very confident. Actually, I really like that one. Really fun to play against a strong team. Wow, very confident. Wow. Is there anything you want to send to your viewers and especially to the Thailand fans who are following Buriram United Esports at EWC? ตอนนี้นะครับมีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆชาวไทยไหมครับแล้วก็แฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะที่คอยซัพพอร์ตบุรีรัมย์ในการแข่งขัน EWC ครั้งนี้ครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับรอบชิงนะพวกผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะคว้าแชมป์มาฝากทุกคนได้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ที่นี่เริ่มบ่ายโมงก็ในรายการแข่งจริงๆก็น่าจะประมาณ6 โมงเย็นครับก็ฝากติดตามมันด้วยครับพวกผมจะคว้าแชมป์มาให้ได้ Alright, so thank you so much everyone for keep supporting us. Like we already made it to the grand final, so right now we're gonna start playing at around 1 p.m. So in Thailand it's supposed to be around 6 p.m. and I hope you guys gonna be enjoying in our games. Ah, so cute. Okay, one more question. If you guys are the champion, how many games you guys will make it? Like how many games can you make it to become the champions? คิดว่าต้องใช้กี่เกมครับจนกว่าเราจะเป็นแชมเปี้ยนได้ในการแข่งขันวันนี้เพราะว่ามาตรฐานมันอยู่ไม่เกิน10 เกมครับน่าจะเป็นแชมป์ได้แต่ว่าถ้าเป็นโดยปกติแล้วรายการอื่นแต่ถ้ารายการนี้ทีมตึงขนาดนี้ผมให้ไม่เกิน12 เกมครับ Normally it's gonna be around 10 games, but for this time there's so many strong teams, so many strong candidates. So I would say around 12. Okay, we got our first number 12 for Buriram United Esports. Thank you, Wasana, so much, and thank you to our translator as well. This is the end of our interview, and please continue to support your favorite team for Buriram United Esports or any team that is here in the final stage of AWC 26 Free Fire. See you guys in a bit. Good to hear from one of the favorites to possibly lift this championship at the end of the day. And the reason why we have to focus on that squad is because they were the top dogs out of the groups, especially when it came down to points. They were averaging about 19.7 points. And this is why they're part of our PS5 story of the day. Not only them, it's going to be Evos as well because they're the defending champions. But going back to Buriram, honestly, if there was ever a time to be able to lift that EWC trophy, it will be today. We're looking forward to it. They have managed to do it in the global finals for FFWS already. So I don't think they will be slowing down. And you did put a little bit of numbers. Not only did they get that average point, when we compare them with Evo Divine, it seems like they are quite equal in both placement as well as elimination. But the only difference is, or what is favoring Buriram United, is the number of times they are in top 3. Because they did end up 8 out of 12 to be on that spot. So it's very difficult to have that on, especially when they are playing in Kalahari as well as Nextera. And with the match format that we're going to be doing, right? The format for today, we got a chance to hear it earlier, but just to recap for everybody, it is going to be a format as in match point. They have to make sure they reach the threshold, which is currently set at 90 points. And with the consistency that you're currently setting, by the way, we're going to be playing unlimited games. We don't have currently a marker, but a team that you mentioned as well, and I know Conchita, you really want to talk about this one because I personally, this is one of my soft spots for me for today. It's going to be none other than Evo's Divine. They already have their name on one of those totems, and it was actually the totem from last year. They're looking to do it again. A lot of people have been saying it was going to be more difficult, but honestly, with the way that they're performing during groups, it's not looking that difficult. Well, let's talk about numbers first, shall we? I mean, Evo's Divine did go straight to the final. They finished second with 229 points. That is beneath Buriram, of course, but they have 134 elimination points and 3 Booyah as well. So they do have what it takes to go to the final and be a contender. But I have to be honest, it's not going to be easy for Evos because looking at the map, looking at the teams that also made it to the final, I see that a lot of drop zones and a lot of rotations are going to clash
match with Lion. And we all know Lion is so good at playing quick, efficient games. They are quick with the rotation, efficient with the player changing. So I think it's going to be a bit of a challenge. I mean, just look at the statics that Lion have yesterday in match 9 during the survival stage. They just went for it. They had 25 elimination points and a booyah, 14,940 damage points with a whopping 20.72% of target shots. That is amazing. I mean, they came with a clutch, and EFOS Divine, looking at numbers also, that's not something that I'm really proud of, especially going through the year. But I think if we're talking about determination, if we're talking about what they are willing to do to actually make that back-to-back happen, they might have a slight chance. Yeah, and for Evos, they're going to be looking for Wasana to be able to perform. Something I know you've been keeping a close eye on Neptune is those skills that they're going to be using. Yeah, especially if he is given the opportunity to get to that Oscar, the Valiant Dash. No blue walls will be safe. No opponents will be left standing in there. And we rarely see it out of Wasana, but the best opportunity they have to counter that, or some of the teams right here, is to add that with a pet like Dreki, because they know exactly when they are trying to heal up. So that's the best advantage they have for a rusher like Wasana. And if we're talking about teams that have won previously here at EWC, even though it is mostly a completely different roster, we have to talk about Team Falcons, because yesterday was a big step up for this squad, and they showcased that they can also get those booyahs. Yes, I am so excited because I finally got their first booyah of the tournament. I mean, yesterday at the survival stage, it proves that it's never too late, and it sent them to the 3rd position. I mean, that is crazy. 105 elimination points, and it was game 8, was it, that they got 21 elimination points and 13,200 damage points with 1,044 average survival time. That is so amazing. Now that is a statistics that I wouldn't want to miss. And for all the squads, honestly, at one point you might just have to say, you know what? Throw those note cards away, throw everything away, because today is either make it or break it. Go for broke for them. Make sure that you're actually going to be able to lift that trophy up at the end. Be consistent and become the Free Fire at EWC champion. Ladies and gentlemen, the finals start now. It all come down to this. Just 12 teams remain in the battle for supremacy on the Gidia City Grid. Teams who have poured their hearts out on the main stage, and today they go again. So join us as we welcome your finalists to the stage, starting with S8UL Esports. Lion!
from United Esports. Loud Sneakers. AGAL. Team Apex Gaming. Twisted Minds. MEBA Los. Your reigning club champions, Team Falcons. Fluxo W7A. Team RRQ. And finally, your defending champions of RWC, EVOS Esports. Whether you are the favorite or the underdog, you all have the same goal to lift that trophy and claim the lion's share of $1 million. Today on this stage, history will be made, a legacy will be cemented, and a champion will be crowned. So welcome to the finals of Free Fire at the Esports World Cup. Ladies and gentlemen, this is Free Fire at the Esports World Cup in Paris. It is time for grand finals of Free Fire at the Esports World Cup. So no time to wait anymore. I think it is time to introduce our teams. Bom, eu considero muito que a gente é mais forte por conta que eu tenho muita confiança no meu time, em mim mesmo. It's all about the timing. ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ารอบชิงครับแล้วก็อยากทำผลงานในรอบชิงให้ดีที่สุดครับอยากได้แชมป์ Members of the Falcons on fire. Loud is stuck in a corner. What a shot! And they won't be denied. สำหรับผมก็น่ากลัวทุกทีมครับถ้าได้เข้ารอบมาในแกรนด์ไฟนอลทุกทีมคือเก่งหมดครับ Eu sou muito confiante em mim mesmo e no meu time, mas nada tirando o mérito da Loud nem do Fluxo em si. ทีมที่อยากจะเอาชนะได้มากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นบุรีรัมย์แล้วก็เอจิโกบอลเพราะว่าเป็นทีมไทยแล้วก็ตึงทั้งสองทีมแล้ว The mantle falls at the very end. หลังจากเล่นรอบกรุ๊ปสเตจเสร็จนะครับก็รู้สึกว่ามีทีมที่เก่งเยอะครับผมเยอะกว่าที่คิดก็เลยทำให้ต้องทำแผนแล้วก็เล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ มีโอกาสได้เห็นเนี่ยผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมได้แชมป์นะ Só queria agradecer a torcida de sempre. Se Deus quiser aí a gente vai erguer esse troféu aí por vocês. Nothing is given, everything is earned, and
for sure, every single one of these teams on stage today made it here from their sweat, blood, and tears. There's a lot of teams that is looking forward to this moment, especially those who struggled in the survival stage and those who were watching after that group stage. This is the finals here at Esports World Cup 2026 Paris. Free Fire seeing its biggest of the competitions and the biggest of names now made their way to the stage. They have unlimited games, but not the same in terms of the eliminations. They have unlimited challenges in front of them, but not the same when it comes to the eliminations because somebody else might take it away. They all start in our match number 1. My name is Lucifer. With me on desk is Neptune as well as Dash Bunny, and we will take you through the grand finals for this very first match. Yeah, it is loud out here. We have the fans coming here cheering for their teams. We have battles of rivalry, and making it here today was not easy. We had stories of heartbreak, we had stories of comebacks, we had stories of last-minute pushes to make it here. And after all, for good reason, after so long, we are seeing India on the big stage. Lucifer, this must be a big moment for you. It is not just for me, it is for the people of India. It is for the players of India. It's for the community of India to see for the very first time. Imagine, they step onto Esports World Cup and there are 3 teams. And on day 1, nothing happens. Day 2, Team Apex Gaming end up getting 2 booyahs, and that rallies up the entire other squads. And survival stage starts off. We end up seeing an Indian booyah to start things off. S8 will then follow up, Tag follow up, back to back. A lot of cascading things happening. And Neptune, you mentioned, out of the 10 games we had, 5 ended up going to India. Yeah, I mean, and there's a lot that has been brought in by India right now. And this is a real surprise. It's not only the teams, it's not only viewers out there, even the talents. Because at some point, they were introduced right here, and there's very little expectation. But now, this is where those were broken. There's a lot of challenges that they face. And again, group stages, like not so much points. But when they went into survival stage, that's when they dominated. Didn't even expect this kind of numbers out of teams. 40% for both Team Apex Gaming as well as SAUL to be able to get to the top 3. And like judging from the teams that were part of survival stage, that was not easy. Yeah, it definitely wasn't easy. And most importantly, I don't know what it is, the mentality, right? Coming into day number 2. I remember AJ was saying, hey, even if you get 1 Indian team up there, it's already really good. Well, lo and behold, we have 2 onto the big stage. And most importantly, the consistency that came in during the survival stage, during, the elimination day as well, was shocking. It was night and day. I'm not too sure what happened the night before. I'm not too sure what they talked about. I'm not too sure what the coaches were happening. And this is where, this is where I think everyone's getting very, very cautious because no team should be looked down upon. No team should be underestimated. And in this situation today, everything is up in the air. Yeah, everything is going to be earned. That's the status of our grand stage now. But talking about this, there is one team that I'm pretty sure upset majority of the Southeast Asian teams who wanted to be here in the grand finals yesterday in survival stage. That is none other than Lion. They roared yesterday. Their name completely glittering and golden rays of sun. Yes. They took the stage up on a storm. They are here. Yes, the other giants are still here, but they are one to look out for. Yeah, speaking of Lion, since we're going to start this first map, look at the numbers. They are the ones on top. They get 1 booyah out of this, and they total 75 every time, or for all the games that they played in Solaro. So I'm really looking forward to this, and we talked about this. This is one of the newest maps in Free Fire right now, and there's still a lot of challenges being encountered by the team. So those who really make the adjustment and study this hard, it has a good chance of grabbing that booyah. Yeah, I think if anything's up in the air right now, we talked a little bit about what it means today as you go into the game, right? Because again, the drop spots are going to be swapping. We didn't have the teams that made their way all the way to grand finals yesterday as well. So yesterday was a battle of just trying to survive. Today is a battle of going
up against the Giants. After all, those names that made it all the way here today had 1 day rest, had some time to dissect the rotations, the drops, the strats, and everything else in between. But my question is, can they, I would say, overcome the high and momentum that some of these teams had coming in from yesterday itself from survival stage? Right now, having the high is going to be Fluxo. We've been seeing from the very beginning. They've been highly in terms of their roaring noise that we've been looking forward to cheering for Fluxo W7M. Right as now, Solara has started off Team Apex Gaming and Lion. They fight it out at Eco Drain. This is what we're talking about. Lion would be the greatest threat out of India right now because Team Apex Gaming is facing them in Eco Drain. And, well, it's a good thing that KD God does have elevation, does have information. But the only question, though, is who is going to push? Because Joker might have a good chance right now. किंग और जोकर डेफिनेटली ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन पहला खिलाड़ी नॉकआउट। ओ यहाँ पे उसी के साथ साथ शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ शोटो को नॉकआउट कर दिया गया। गेम्स किंग के पास पूरा मौका साहिल के ऊपर हमला करते हुए यहाँ पे, और इसी के साथ मुझे लगता है वुल्विन को पीछे हटना पड़ेगा। बैक टू बैक दो खिलाड़ी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। डेला चेस करेंगे वुल्विन को, वुल्विन के ऊपर हमला। वुल्विन यहाँ पे बचने के विकल्प ढूंढते हुए, और ढूंढने ही पड़ेंगे कि एक छोटी सी चूक यहाँ पे पूरी टीम को एलिमिनेट कर सकती है। शायद केडी गॉड मौके की ताक में पीछे हटे थे, लेकिन क्या रिवाइव दे पाए ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। और अभी के लिए तो ये दिखाई पड़ता है लियोन ई-स्पोर्ट्स का पलड़ा इको ट्रेंड पे भारी। केडी व्हीकल के साथ निकल तो गए पर स्टूडियो पर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहां भी टीम से इंतजार करेंगी। ड्रॉप चेंज करा पर ड्रॉप क्लैश अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। एसएटोएल की बात करें, देखिए खिलाड़ी ट्रोल लॉक पड़े हुए हैं। इस समय टीवी टावर पे ये टीम उतरी थी। इस समय मुलाकात होने वाली ट्विस्टेड माइंड के साथ एक एलिमिनेशन की जरूरत है। ट्रोल को बचाने का ट्राई करा जा रहा है। नूर आगे जाएंगे, कल कमाल के हेडशॉट जड़े हैं और इस समय नॉक्स निकाले हैं। नूर कमाल का प्ले, इस समय नूर बनी को बचाएंगे, ग्लू वॉल लगाएंगे और सामने आपको दबस नजर आएंगे। दबस के कम, और ये नूर का कमाल का प्ले, एक और नॉक निकाल दिया, एक और एलिमिनेशन खाते में डालेंगे। कमाल का प्ले आ रहा है टीम एसएटोएल ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। एक खिलाड़ी को गवाया, ट्रोल को बचा तो नहीं पाए, पर इस समय सामने वाली टीम के 3 खिलाड़ी लॉबी की तरफ रवाना करें। ऑन द अदर साइड वॉश अपने टीममेट्स को बचा लेंगे, फ्लुक्स अपने टीममेट्स को बचा लेंगे, ट्विस्टेड माइंड भी अपने खिलाड़ी को बचा लेंगे। यहाँ पे क्या यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को भी सफलता हाथ लगी है रिवाइवल देने में। ऑन द अदर साइड टीम एजीएल का भी कमाल का प्ले करते हुए वॉश की तरफ आप ध्यान देते रहिए। ये टीम नीचे उतर रही है और जहां जा रही है वहां लॉयन भी होने वाली है शायद से थोड़ी दूरी पे, पर इवॉस को ये ड्रॉप मिल जाएगी। ब्लूम टाउन की बात करें इस दौरान फुलुक्सो की, देर आए पर दुरुस्त आए। लायंस का हाथ गर्म है, पर क्या ये लायंस को हराने के लिए काफी रहेगा? जी मुझे तो लगता है यहाँ पे फ्लुक्सो के पास थोड़ी बेहतर लूट है किस्मत यहाँ पे लायन के। और इसी के साथ अगर आप देखें ग्यू ने पहला नॉकआउट निकाल, और डेला के ऊपर यहाँ पे हेडशॉट से शुरुआत की थी और किस्मत के नहीं रहे यहीं पे हुए। साइफर नेम यहाँ पे पहुंच चुके हैं मौके की ताक में, और इसी के साथ विभिन्न जगह की तरफ नॉकआउट और उनका एलिमिनेशन ब्लैक करते हुए फ्लुक्सो के ऊपर यहाँ मुझे तो लगा ऑल गेमर्स ग्लोबल पूरी तरह से धावा बोले कि 12 का पोजीशन देखिए काफी अचूक, लेकिन वो का फॉर्म में पहला नॉकआउट निकलने में कामयाब। रिवाइव देने की लाइन ई-स्पोर्ट्स और अपने दोनों साथियों को रिवाइव दे देंगे। इनफैक्ट 4 मिनट का खेल लगभग समाप्त होने वाला है, एक भी टीम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुई और अब ऑटो रिवाइवल का समय समाप्त होता है। और अब अगर आप अपने 2 से 3 खिलाड़ी गंवाते हैं तो फिर आपको मैन्युअली जाके वाइंडिंग मशीन से ही रिवाइव देना पड़ेगा। वो के पास यहाँ पे बचने के कोई विकल्प नहीं, ड्यूक की स्नाइपर आग उगल रही है। इसी के साथ यहाँ पे ड्यू यहाँ पे कमाल के शॉट कनेक्ट करते हुए ड्यू अकेले है, लेकिन पूरी टीम के समान बॉब्स और ड्यू कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्यू चल गए तो मुझे लगता है फ्लुक्सो के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। एक बार फिर से फ्लुक्सो की ओर से दमदार शुरुआत। आज बॉडी लैंग्वेज कंपैरेटिवली जो 2-3 इन्होंने खेल दिखाया था और उसके मुकाबले आज काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। फ्लुक्सो चेहरे पे मुस्कान थी, बुज्जिन काफी जोश में दिख रहे थे। आज अगर फ्लुक्सो यहाँ पे चौका दे शुरुआती 3-4 मैचेस में सरप्राइज होने की बात नहीं है, लेकिन ड्यू बनाम ड्यू, और ड्यू जिस किस्म के फॉर्म में है मुझे तो लग रहा है शायद जाते जाते भी एक आध चोट लगा जाएंगे। यागो के ऊपर हमला और लॉस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो जाती है। कर्सी ऑफ आरआरक्यू काजू, वो एक चिट प्रतिद्वंदी बॉटम ऑफ द टेबल एलिमिनेट हो चुके हैं। और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी होने के संकेत हैं ये।
कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। लॉस का एलिमिनेट होना इस समय उनको तो परेशान करेगा, पर टीम एपेक्स गेमिंग एंड टीम एस-12 ई-स्पोर्ट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। खाता नहीं खोला है पर टीम एपेक्स गेमिंग का, पर एस-12 ने 4 एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए हैं। देखिए लॉबी वापस से शांत होने की तरफ जा रही है, पर देखिए टीम्स लगातार आपस में भिड़ती हुई नजर भी आएंगी। फैल्कन्स हमारे सामने होने वाली है। देखिए फन फेयर के ऊपर फन करने का मौका नहीं है। बात करें इस टाइम पे किरोरो वहां नॉक निकालने का ट्राई करेंगे, माल वहां पे किरोरो का एलिमिनेशन एक्वायर कर लेंगे। देखिए माल काफी कमाल के खिलाड़ी हैं। इस दौरान एक और एलिमिनेशन बटोरने की कोशिश, एक और खिलाड़ी नॉक किया। टीम फैल्कन्स लॉबी की तरफ रवाना हो रही है। चार्ज बस्टर का प्रयोग, एक और खिलाड़ी को स्पॉट करा, ऑन फायर यहाँ पर नॉक कर दिए जाएंगे। इस समय आरआर के अपने टीममेट्स को बचा लेंगे एंड इस दौरान 7 एलिमिनेशन एक्वायर कर लेंगे। 7 एलिमिनेशन एक्वायर ही नहीं करे हैं, एलिमिनेशन लीडर भी बन चुके हैं। एजीएल भी एलिमिनेशन बटोर रही है। लिमिट आखिरी खिलाड़ी रिवाइवल के लिए पहुंचे हैं विंड मिल पे। मैं सब एक चीज की और चर्चा करूंगा आपसे कि देखिए इस दौरान आप एक चीज साफ नजर आ रही होगी कि टीम्स शुरुआती पलों से ही 90 अंकों के लिए अग्रसर है। शुरुआती पलों में उनको पता है जल्दी से जल्दी अगर हम 90 अंक निकालेंगे तो उतना आसान होगा, उनको उतने ही ज़्यादा मैचेस का बफ मिल सकता है या फिर एडवांटेज मिल सकता है। तो इस चीज़ का फायदा भी उठाने की कोशिश करी जा रही है, इसलिए मल्टीपल टीम्स अग्रेसिव प्ले कर रही हैं, एलिमिनेशन सेंट्रिक खेल रही है कंपेयर टू द ग्रुप स्टेजेस, जहाँ पे हमें थोड़ा सा एक बैलेंस प्ले नजर आ रहा था। पर बात करें लाउड की, देखिए कहाँ चढ़ करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है निंजा थोड़ी बन गए। देखिए इस वक्त तो मुझे लगता है निंजा या सामुराई बनना ही पड़ेगा। 7 एलिमिनेशन अगर आप देखें लायन ई-स्पोर्ट्स के पास भी है और ट्विस्टेड माइंड्स के ऊपर भी इस वक्त मुझे लगता है वो खतरा बन रहा। तो ये 2 बार मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से रिवाइव होने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार तो जैसे तैसे बच गए थे, इस बार किस्मत कितना साथ देगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे एक चीज है और जो भी टीम टेबल पे टॉप 3 पोजीशन पे दिखेगी उनको मुझे लगता है टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो ईडब्ल्यूसी के जो चरण हुए थे उसमें भी मैंने यही चीज फॉलो की थी कि कहीं ना कहीं टीमें जो ऊपर की तरफ जाती है उनको आगे और बढ़ने की जो ताक होती है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश होती है बाकी टीमों द्वारा। और ये वो पल थे जहां पे लॉस को ठिकाने लगा था आरआरक्यू ने, और इस वक्त पीना के पीछे हाथ धो के पड़ गए। पीना के पास बीट बचाव का कोई मौका नहीं, और इसी के साथ एबे ने अपना चौथा एलिमिनेशन सिक्योर कर लिया है। डट्स एलिमिनेटेड है, उनको रिवाइव देने की कोशिश अवश्य करेंगे। आल और उसके अलावा रांस कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि यहां पे और एलिमिनेशन निकाल कर अपने साथी को रिवाइव दी जा सके। नहीं, ट्विस्टेड माइंड्स इस वक्त तो स्ट्रगल कर रही है। बैक टू बैक इतनी बार रिवाइव होने के बाद ना लूट नहीं है, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा अभी के लिए तो डामाडोल नजर आता हुआ है। और आरआरक्यू पूरी तरीके से यहां पे कंट्रोल में है। विंडमिल के तरफ मैं तो देख पा रहा हूं यहां पे आरआरक्यू को पूरी तरीके से कंट्रोल पे, और जंप को अपने साथी के साथ ही रहना पड़ेगा। दोनों कैसी का जोड़ा थेबास और जंप कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आरआरक्यू के बैक टू बैक 2 खिलाड़ी चढ़ गए तो बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एबे की ओर से एक और सटीक नेड, 2 उसके अलावा मेल्टर और थेबास यहां पे स्पॉट हो चुके हैं। एबे ने आते ही पहला नॉकआउट निकाले, लेकिन रांस और एबे दोनों यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। और बाप रे, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ डच को भी नॉकआउट कर दिया गया था। स्नाइपर रिवाइव दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास नहीं रहने वाली है थीवा। अब किस तरीके से यहाँ पे बच पाएंगे? ट्विस्टेड माइंड्स ने तो पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया है। यहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स कहते हुए आरआरक्यू को कि 100 सोनार की तो 1 लोहार की। कैसी लगी ये स्ट्रेटजी? और अब बचना पड़ेगा डच को, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आरआरक्यू मुसीबत में। और लायन इज एवरीवेयर। ओ डायमंड ने गिरते पड़ते रिवाइव दे दिया, और वरना जिस तरीके से इस वक्त लायन ई स्पोर्ट्स खेल रही है, ये तो वन ऑफ द टॉप कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। शुरुआती पलों से हाथ गर्म नजर आ रहे हैं लायन के। शुरुआत में एकोड्रेंस पे मुलाकात हुई टीम एपेक्स गेमिंग से, वहां एलिमिनेशन बटोरे 3। इसके बाद धीरे धीरे करके जो एलिमिनेशंस की भूख है इस टीम की शांत नहीं हुई है। लायन यहां से सभी टीम्स को परेशान करेगी। ट्विस्टेड माइंड अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ रिवाइवल का प्रयास करेंगे। बुरीराम यूनाइटेड वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग। आई थिंक सो ये एक बहुत बड़ा प्ले हो सकता है। वसाना यहाँ पे ऊपर नजर आएंगे, एंटी मैटेरियल लॉन्चर, एंड साथ में बात करें तो शील्ड गन का प्रयोग कर रहे हैं। उनको पता है किस वेपनरी के साथ उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। शील्ड गन का फायदा उठाया जा सकता है, अच्छे से ड्रैग लगाए जा सकते हैं और ओपनली शॉट्स लिए जा सकते हैं। बात करें केडी गॉड की, कवर में खेलना पड़ेगा। वसाना एंड टीम कवर, ओ यहाँ से शॉट लेने का ट्राई कर रहे हैं। केडी को यहाँ से शॉट लेने पड़ेंगे, कवर प्रदान करना पड़ेगा। यही बात करें टीएजी के बारे में, कंपाउंड के अंदर जाने का प्रयास
पास, केडी को भी चोटिल करा हुआ, एक और खिलाड़ी नॉक है, जो ने अभी शॉट ली गई, यहाँ पे एक और खिलाड़ी नॉक करने जगह वुल्विन एंड 2 खिलाड़ी नॉक पड़े हैं। छोटो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो शील्ड गन का हमला है वो काफी कमाल का आने वाला है। बुरीराम यूनाइटेड एक तरफ से शो करते हुए कि मेटा का सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, सही वेपनरीज का हम फायदा उठा सकते हैं। टीम एपेक्स गेमिंग को घेरा जा रहा है, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का फायदा उठाने की कोशिश है। छोटो और केडी 2 खिलाड़ी बचे, वेंडिंग जस्ट बगल में है, रिवाइव देने का ट्राई भी करा जाएगा, क्या बचा लिया जाएगा? केडी जा पहुंचे हैं वेंडिंग के पास, दोनों खिलाड़ी को बचा लिया जगह पर बुरीराम यूनाइटेड मुझे लगता है वाटरफॉल से टस से मस नहीं होगी इस समय। देखिए यहाँ पे जोइना की पोजीशन क्या कमाल का खेला है, बात करें 360 डिग्री कवर और या आसमान में शॉट और कार 98 का क्या कमाल का प्रयोग। यहाँ पे वुल्विन का एलिमिनेशन दोबारा से एक्वायर करा जगह, केडी गॉड का एक और बार रिवाइवल देने का ट्राई करेंगे, वेंडिंग पर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं, वहां साहिल को भी नॉक कर दिया है, जोइना रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे कार 98 का बहुत ही कमाल का प्रयोग, लगातार 2 एलिमिनेशन आसमान में डक हंट करके बुरीराम यूनाइटेड विद 9 एलिमिनेशंस राइट नाउ वो फॉल बैक कर रहे हैं, पर टीम एपेक्स गेमिंग को इस कगार पे तो छोड़ के गए हैं कि यहां से उन्हें अब सर्वाइवल के लिए ही खेलना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। और देखिए इस वक्त टीम एपेक्स गेमिंग को सिर्फ एक ही परिस्थिति बचा सकती है, वो है कि कोई थर्ड पार्टी हो जाए बुरीराम यूनाइटेड पे, तभी यहाँ पे बीच बचाव हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से फंसे हैं ना 2 खिलाड़ी, ना बुरीराम आगे की तरफ जा रही है, ना किसी को इस टेरिटरी में आने दे रही है, वॉल्टर का एक हल्का सा कवर और